Hey guys, this is Gurjap and today we are starting a new chapter, limits and derivatives, and in this video we'll be talking about limits. So, a value that a function approaches as its variable approaches some value is called limit of that function. What does it mean? We can also say that a value we get closer and closer to but never quite reach. Well, you will not get anywhere with this definition. So let's just look at it mathematically. Suppose, consider a situation. Suppose you are in your room chilling with your friends and suddenly you realize that everyone else is eating ice cream. Then you'll be like, where is my ice cream? Because you forgot it in the kitchen. So you get up and you start moving toward the kitchen. So as you're moving toward the kitchen, say you are in your room and this is kitchen. As you start moving toward the kitchen, if someone is looking at you from far, far away, suppose an intergalactic ninja is looking at you through a portal, he'll be like, this guy is approaching the kitchen to get the ice cream. Since you're not there, you're getting there, so we'll say you are approaching. This is an important word in this exercise, approaching. So if we can put the situation mathematically, I'll say, suppose there's a function f of x is equal to 2x square plus 3. Okay, I'm interested to find its value at x is equal to 3. Cool. So suppose I'll try to find its value closer to 3. Okay, at this is value of x, this is value of this function. So at x is equal to 2.9, the value of this function becomes 19.82. Okay, you can try and calculate it using your calculators. Second, now I want to get closer to 3, okay, because I'm approaching this value. I'm not quite there yet. Cool. So at 2.99, I'll get the value 20.8802, and then at 2.999, I'll get the value 20.988002. So as we observe this, we'll see that as its value of x is reaching or approaching the value of 3, the value of f of x is approaching the value of 21. Okay, so I can write it mathematically as the limit x is approaching to 3. As x is approaching to 3, the value of this function is approaching the value of 21. Cool, that is how we use limits. But if we can put the value of 3 directly, we'll get the same result in this case. So f of 3 will become 2 into 3 square plus 3, which gives us 9 into 2, 18 plus 3, 21. So if I can get the value directly, why would I use limit? Because all the functions are not the same and all the situations are not the same. So suppose the same scenario, you're trying to get the ice cream. Now when you reach the kitchen, you're still approaching your ice cream. So as you approach or reach that particular point where you left your ice cream, there will be two situations. Number one, you'll get the ice cream, you'll be happy. Number two, it will be stolen by that intergalactic ninja because he can't help it. So in that case, what will you do? Let's look at it with another function. So suppose the function is f of x is equal to x square minus 4 upon x minus 2, and we are interested to find its value at x is equal to 2. Let's just put this value directly. We'll get f of 2 is equal to 2 square minus 4 upon 2 minus 2, which is equal to 0 upon 0. Now in this chapter we want to avoid this. This is a no-no. 0 by 0 doesn't mean anything. It is called indeterminate form. So we doesn't get any result when we use this value directly. That's where limits come in use. So suppose I want to find its value closer to x firstly. So what is the closest point to 2? 1.9. At 1.9, I'll get the value 3.9. At 1.99, we'll get the value 3.99. At 1.999, we'll get the value 3.999. So as we observe this, we can say as the value of x is approaching what? 2. As value of x is approaching 2, the value of f of x is approaching 4. So I can write it mathematically as limit
as limit x approaches to. Limit x approaches to doesn't mean x is equal to 2. It means x is reaching there slowly. Okay. So as limit x approaches to 2, the value of f of x is equal to 4. So I hope we were able to clear the concept of limits using these two examples. Now let's see how we write limits mathematically properly. So if I say that as x approaches to certain value a, f of x approaches certain value L. This L is called limit of this function, and we write it as limit x approaches to a, f of x is equal to L. Now we know what limits are. Limit is basically a value that a function gets arbitrarily close to, or a value we get closer and closer to but never quite reach. Okay, now let's just dig into some examples so we can further understand the concept of limits. Now we have a few examples and we need to find the limit in each of these cases. First one is we have to find limit x approaches to 3, x plus 3. Okay, here f of x is x plus 3, so I can write limit x approaches to 3, x plus 3 gives us 3 plus 3, which is equal to 6. Easy. These are basic questions, really easy. Next one is limit x approaches to 1, pi r square. So I can write here f of x is equal to pi r square, pi x square. So limit x approaches to 1, f of x is equal to pi x square, which is equal to pi 1 square, which gives us pi. Cool. Next one, limit x approaches to 4, 4x plus 3 upon x minus 2. Here f of x is equal to 4x plus 3 upon x minus 2. So limit x approaches to 4, f of x becomes 4 into 4 plus 3 upon 4 minus 2, which is equal to 16 plus 3, that is 19 upon 2. Cool. Now the last example is here f of x is equal to x raised to power 10 minus x raised to power 5 plus 1 over x minus 1. So limit x approaches to minus 1, f of x will be equal to minus 1 raised to power 10 minus of minus 1 raised to power 5 plus 1 upon minus 1. Clear? Now minus 1 raised to power even power, we get 1 minus 1 minus of minus 1 plus 1 upon minus 2, which is equal to minus plus. So 1 plus 1 plus 1, 3 upon minus 2, which is equal to minus 3 upon 2, and hence the result. Now we have yet to come across a function which leads up to 0 by 0 form. So if in any case, if a function leads up to 0 by 0 form, what we do, we substitute its values, and if we can reduce the function in a form x raised to power n minus a raised to power n over x minus a, in this form, if you are able to reduce a function in this form, then its limit at x approaches to a, all these conditions shall be satisfied, will be equal to n a raised to power n minus 1. It is an expression and formula, you should remember it. Now let's solve these examples. This is for you to remember, just in case. So first one is limit x approaches to 0, ax plus b upon cx plus 1. If we put the value x is equal to 0 in this case, I'll get a into 0 plus b upon c into 0 into 1. It will not lead to 0 by 0 form, so I can write f of x is equal to ax plus b upon cx plus 1. So limit x approaches to 0, f of x will be equal to a into 0 plus b upon c into 0 plus 1, which is equal to b. As the result. Next one, limit x approaches to 1, ax square plus bx plus c upon cx square plus bx plus a will be equal to, this is f of x, so limit x approaches to 1, f of x will be equal to a into 1 raised to power 2 plus b into 1 plus c upon c into 1 raised to power 2 plus b into 1 plus a, which is equal to a plus b plus c upon c plus b plus a, which will cancel out, which is equal to 1. Okay. Now last example is limit x approaches to 0, x plus 1 raised to power 5 minus 1 upon x
which will lead up to 0 plus 1 raised to power 5 minus 1 upon 0, which is equal to 0 by 0 form. This is a no-no. Just like you don't want to write your name in a death note, we don't want this in the chapter of limits. So we'll have to substitute it. So put x plus 1 is equal to y. If we put x plus 1 is equal to y here, we'll get y raised to power 5 minus 1 upon x here क्या आ जाएगा? This will imply x is equal to y minus 1. So I'll get y minus 1 and limit x will approach to 1. So in this case, we'll reaching this state which will be equal to 5 into a क्या है हमारे पास 1, yes 1 raised to power 5 minus 1 which is equal to 5 and hence the result. Now we'll try and find limits of some trigonometric function, but for that you should know these three expressions. First one is sandwich theorem. If we have three functions f of x, g of x and h of x such that f of x is less than equal to g of x is less than equal to h of x, and we know somehow that limit x approaches to a, f of x is equal to L, which is equal to limit x approaches to a, h of x. Means हमें साइड वाले दो फंक्शंस की वैल्यू पता है. So in this case gx is being sandwiched between h of x and f of x. So I can write implying g of x limit x approaches to a will be equal to L. मीन्स हमारे पास अगर तीन फंक्शंस हैं, हमें साइड के दो फंक्शंस की वैल्यू पता है, उनकी लिमिट पता है सॉरी, तो बीच वाले फंक्शन की लिमिट भी उनके बराबर होगी. नाउ दीज टू आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस. इफ़ यू आर गिवन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1 एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x इज इक्वल टू 0. नाउ लेट्स ट्राई एंड सॉल्व सम एग्जाम्पल्स. Now next example is limit x approaches to 0 sin ax upon bx. So if I multiply and divide it by ax, I can write sin limit x approaches to 0 sin ax into upon bx into ax upon ax, which is equal to limit x approaches to 0 sin ax upon ax into ax upon bx. हमने इन दोनों को क्या करा, इंटरचेंज कर दिया, मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है. सो वी नो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin ax अपॉन ax इज इक्वल टू 1. सो दिस विल बिकम 1 एंड x से x कट गया, फाइनल आंसर क्या आ गया, दिस होल टर्म बिकम्स 1, फाइनल आंसर इज a अपॉन b. कूल. नेक्स्ट वन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x अपॉन पाई माइनस x. सो वी नो cos 0 क्या होता है 1, नीचे भी पाई माइनस 0 हो जाएगा, क्या रह जाएगा पाई. तो 0 बाई 0 फॉर्म नहीं बन रही, तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं. वी कैन राइट cos 0 अपॉन पाई माइनस 0, cos 0 इज इक्वल टू 1, सो 1 अपॉन पाई इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन पाई माइनस x अपॉन पाई इंटू पाई माइनस x. आई कैन ऑल्सो राइट इट एज 1 अपॉन पाई कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा. लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन पाई माइनस x अपॉन पाई माइनस x. ये कौन सी फॉर्म में है, इस फॉर्म में. दिस होल टर्म विल बी इक्वल टू 1, सो फाइनल आंसर इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई. कूल. लास्ट एग्जांपल लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax प्लस x इंटू कॉस x अपॉन b sin x. सो आई कैन राइट इट एज लिमिट x अप्रोचेस टू 0, b कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, 1 अपॉन b इंटू इन दोनों टर्म्स में क्या है x कॉमन है, सो x इंटू a प्लस कॉस x अपॉन साइन x विच इज इक्वल टू 1 अपॉन b लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x अपॉन साइन x, इन दोनों को अलग से लिख लिया, इंटू a प्लस कॉस x, इनको अलग से लिख लिया. ओके, तो सॉल्विंग इट फर्दर आई कैन राइट इट एज, इन दोनों की लिमिट क्या कर दूंगा मैं अलग अलग. सो 1 अपॉन b इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x अपॉन साइन x इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a प्लस कॉस x विल बी इक्वल टू 1 अपॉन b
अब x को अगर मैं नीचे ले आता हूँ साइन के साथ डिनोमिनेटर में, सो आई कैन राइट 1 अपॉन लिमिट साइन x अपॉन x इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a प्लस cos x. Now we have 1 upon b. ये कौन सी फॉर्म में है? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax अपॉन ax इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में. सो आई कैन राइट इट एज दिस इज इक्वल टू 1. और यहाँ पे अगर मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ तो a प्लस cos 0 क्या होता है? 1. सो आई गेट 1 अपॉन b इंटू 1 a प्लस 1 विच इज इक्वल टू a प्लस 1 upon b and has the result. Now next point is left hand limit and right hand limit. So if we have a function whose limit is L as x approaches to a, तो नंबर लाइन पे अगर मैं x को अप्रोच करा रहा, x कोई नंबर a कोई नंबर ही होगा, तो सपोज a की वैल्यू है यहाँ पे. अब हम a को कहाँ से अप्रोच कर सकते हैं? इफ़ सपोज a की वैल्यू है a इज इक्वल टू 2, आई कैन अप्रोच इट फ्रॉम द हायर वैल्यू. मतलब मैं इसको 5, 4, 3 मतलब हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ भी अप्रोच कर सकता हूँ, या फिर मैं इसे लोअर वैल्यू दैट इज -2, -1 देन 0 देन 1 कुछ इस तरह से भी इसको अप्रोच कर सकता हूँ. मतलब ए को अप्रोच करने के दो तरीके हैं, 1 फ्रॉम द हायर वैल्यू और द राइट हैंड साइड ऑफ ए, सेकेंड फ्रॉम द लोअर वैल्यू और द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द नंबर लाइन. ओके, सो अगर हम लिमिट को राइट हैंड साइड से अप्रोच कराते हैं उसको बोलते हैं हम राइट हैंड लिमिट, और अगर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कराते हैं तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड साइड मीन लोअर साइड से इसको अप्रोच कराएंगे, राइट हैंड साइड मीन हायर साइड से अप्रोच कराएंगे. सो सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1. कूल, मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है लिमिट एट x अप्रोचेस टू 5. कूल, तो मैं इसकी लिमिट लेफ्ट हैंड साइड से भी निकाल सकता हूँ, राइट हैंड साइड से भी. सो अगर मेरे को इसकी लेफ्ट हैंड साइड से इसकी लिमिट चेक करनी है, आई कैन राइट लिमिट x अप्रोचेस टू 5, लेकिन इसकी सुपरस्क्रिप्ट क्या लगाऊंगा मैं? नेगेटिव साइन फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट. तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? f ऑफ x इज इक्वल टू 3. यहाँ पे 5 के साथ नेगेटिव साइन नहीं लगेगा, मैं सिर्फ ये दिखाने के लिए इसके ऊपर नेगेटिव लगा रहा हूँ कि ये लेफ्ट हैंड साइड से इसको अप्रोच करा रहा है. ओके, सो 5 स्क्वायर 25 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 76. फॉर राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 5. अब राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लगाते हैं हम? 5 के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में पॉजिटिव साइन. f ऑफ x इज इक्वल टू वैल्यू फिर से क्या आएगी? सेम 3 इंटू 25 प्लस 1 दैट इज 76. सो अगर किसी फंक्शन के केस में हमने लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट भी निकाली, राइट हैंड साइड की लिमिट भी निकाली, एंड इफ लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit, this will implies that limit exists for that said function. तो अगर आपको किसी क्वेश्चन बोला हो फाइंड इफ लिमिट एग्जिस्ट फॉर दिस फंक्शन, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट भी, और अगर एक दूसरे के इक्वल होते हैं देन वी से दैट द लिमिट एग्जिस्ट, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. नाउ इन दिस एग्जांपल वी हैव टू फाइंड द लिमिट of f of x as x approaches to 1 if f of x is x square minus 1 if x is less than equal to 2 and minus x square minus 1 if x is greater than equal to 1. So in this case हम क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. सो लेफ्ट हैंड लिमिट will be f of x limit x approaches to 1 negative on the superscript will be equal to, अब x 1 से कम कहाँ पे है? इस केस में x स्क्वायर माइनस 1 में. सो आई राइट x स्क्वायर माइनस 1, पुट द वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0. कूल, नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव साइन ऑन द सुपरस्क्रिप्ट f ऑफ x इज इक्वल टू, अब x 1 से बड़ा मतलब राइट हैंड साइड से अप्रोच करा रहा है कहाँ पे? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 के केस में. सो minus x square minus 1 will be equal to 1 square minus 1 which is equal to minus 2 and hence the result. So left hand limit in this case, left hand limit is not equal to right hand limit, implies limit for f of x
is equal to limit for f of x does not exist. In this example, we have to find limit x approaches to 0 f of x if f of x is x upon modulus of x at x not equal to 0 and 0 if x is equal to 0. Now, before we solve this example, let me remind you property of modulus of x. Modulus of x is equal to minus x if x is less than 0 and modulus of x is equal to x if x is greater than equal to 0. Sorry. This is the property of modulus of x. Now let's begin. Left hand limit in this case will be equal to limit x approaches to 0 but from left hand side, so negative on the superscript f of x is equal to limit x approaches to 0 negative x upon x mod. Now since left hand side of 0 is all negative and we are approaching from left hand side in this case, so modulus of x will be equal to negative x. So we get limit x approaches to 0 negative x upon minus x is equal to limit x approaches to 0 minus 1 which is equal to minus 1. Cool. So for right hand limit we have f for limit x approaches to 0 positive x upon x mod is equal to, अब क्योंकि 0 से बड़ी है इसकी वैल्यू, मॉडुलस ऑफ x क्या होगा पॉजिटिव, सो आई कैन राइट लिमिट x approaches to 0 x upon x x cancel which is equal to 1. So left hand limit is minus 1, right hand limit is 1, so I can write left hand limit is not equal to right hand limit, or you can also write it as limit x approaches to 0 negative f of x is not equal to limit x approaches to 0 positive f of x, and hence the result. Now in this example we have to find the limit of f of x at x approaches to 5 where f of x is equal to modulus of x minus 5. So left hand limit in this case is limit x approaches to 5 f of x is equal to limit x approaches to 5 सुपरस्क्रिप्ट में नेगेटिव साइन x mod minus 5 which is equal to, अब मॉडुलस ऑफ x इस केस में दोनों बार क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि हम 0 से नीचे दैट इज नेगेटिव साइन कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि 5 से पिछला का नंबर क्या होगा, हम 2 3 4 कुछ इस तरह अप्रोच करेंगे तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा. सो वी गेट 5 minus 5 which is equal to 0. For right hand limit x approaches to 5 positive f of x is equal to limit x approaches to 5 positive modulus of x minus 5. इस केस में भी modulus of x क्या होगा x के इक्वल, so we get limit x approaches to 5 positive x minus 5 which is equal to 5 minus 5 which is equal to 0 implies that the left hand limit is equal to the right hand limit and hence the limit exists in this case, hence the result. So guys, this was it for today. Next time we'll learn about derivatives. Till then, keep practicing.